नौशाद अहमद साहब को मैं दावत दूंगा, जिन्होंने रिजवी कॉलेज से लॉ की पढ़ाई पढ़ी है। शाहिद आजमी साहब का केस वो सेशंस कोर्ट में भी लड़ है। नौशाद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं भाई को थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा कि शाहिद आजमी साहब का केस सरकार लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रही। दूसरी बात, केस का स्टेटस क्या है? हम केस को कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं 2011 से, और मैं इसके साथ 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। केस का स्टेटस क्या है मैं आपको बता दूं तो इस केस में 38 विटनेस एग्जामिन हो रहा है, 37 विटनेस एग्जामिन हो चुके हैं, 38 विटनेस चल रहा है। पॉसिबिलिटी के 2-3 विटनेस और एग्जामिन होंगे इसके, जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, असिस्टेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, और शायद केमिकल एनालाइजर को भी बुलाया जाए। 2011 से केस चल रहा है, लेकिन उम्मीद है कि ये सब इंसाफ होगा इंशाल्लाह। फिलहाल तो केस को लेकर यही अपडेट है। इंशाल्लाह आने वाले अगले साल में से पहले ये केस कंक्लूड हो जाएगा और हम केस के डिसीजन पे बात करेंगे इंशाल्लाह। केस का स्टेटस पे हम पूरे 11 साल से हर साल इस तरह के फंक्शन ऑर्गेनाइज होते हैं, यहाँ होते हैं, हिंदुस्तान के हर कोने पे होते हैं, तो हम उसी पे केस के स्टेटस पे हमेशा बात करते हैं। लेकिन 2025 खत्म होने से पहले उम्मीद है कि केस कंक्लूजन हो जाएगा और इंसाफ होगा इंशाल्लाह। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि इस टॉपिक पे ज्यादा बोलना इस समय सही भी नहीं है। जैसे ही कंक्लूजन होगा तो सबके सामने सारी चीजें आ ही जाएंगी और डिटेल में फिर उस वक्त हम बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन इंशाल्लाह इस साल कंक्लूजन होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। शुक्रिया। इसके बाद मैं शाहिद आजमी साहब के बड़े भाई आरिफ आजमी साहब को दावत दूंगा कि वो आकर अपने छोटे भाई के बारे में, जो उनका वक्त उनके साथ गुजरा, उस बारे में बात करें। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग। देखिए, ये लीगल लोग हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, तो आई एम अ मिसफिट हियर, बट स्टिल आई ट्राई टू डू जस्टिस टू व्हाटएवर आई से। A very normal guy. We were 5 brothers. 14 years have passed since he is no more. But a very normal guy, normal in studies, and nothing abnormal. Or we never thought that he would be discussed 14 years after his death or something like that. But what made him different, according to me, was his fight for justice. And there is a misnomer that it was only for a particular community. No, it was never so. If you did speak to him कि ये आदमी है and इसके पास lawyer नहीं है, so he would be ready to fight for it. Money was secondary. Might be his tenure in Tihar made him so, because sometimes it were difficult times, because we all 5 brothers were orphan. So when I used to visit him at Delhi at Tihar, so sometimes soap was not there, clothes were not there, books were a luxury. So there are times when things are a luxury, right? Normal things are luxury. तो शायद ये सब आप बीती ने उन्हें एक बेहतर इंसान बना दिया था कि he realized what was the need. Like for example, when he started his practice, twice or thrice I visited him कि practice कैसी चल रही है. As an elder brother, I had a concern कि he should be a successful lawyer. I am a banker. So my things were basically banking oriented. What would be his bank balance? How great would he do? But I never knew that such people do not care for bank balances or success. Monetary success was secondary to him, or not of that importance to him. So whenever I used to visit him, there was a bunch of crowd in his office at Taximan's colony. मतलब इतने लोग रहते थे कि आपको खुद आधा घंटा वेट करना पड़ता था मिलने के लिए. So I thought his business is doing great. But when I used to go in, he used to tell me कि ये अभी कल छूटा है, इसके पास गांव जाने के पैसे नहीं है, जरा तू इसको 2000 दे दे. So 3-4 times I went to his office. After that I stopped it. So because first of all you buy a office for him on loan, you give him a car bought on loan, and then every time you have to go and pay for his clients also. So thank you so much. I use my banker brains and stop doing that. But then somewhere back, when I go in say 1990s, early 1990s, 94, 93. I think that my mother is partly responsible for whatever happened or how he grew up. In Muslims, there is a saying कि if you have a daughter and you get married her off to a good guy, you become जन्नत आप पे वाजिब हो जाती है, right? So unfortunately, we were 4 brothers, 5 brothers. There was no sister. So there was a Maulana who came to our house. So mom very promptly asked her, "See, I don't have a daughter. So how will Jannah be wajib on me during my lifetime?" So Maulana said कि one of your kids I'm so
your son would receive martyrdom in the way of Allah, and that would be your guarantee for your Jannah. So I think that was our prayer, and it got Allah ne kabul ki, and Allah gave him Jannah, and rest of the family would follow the suit. But definitely a different guy in search of justice. I could remember that whenever there was a discussion about anything, he was very positive of life, very positive. In fact, he used to receive calls every now and then about, with death threats and all. But very lively guy, just received a death threat call and he's telling me ki chal shopping jate hain. So that was the attitude towards life. And I'm sorry for this tears and all. I'm sorry, extremely sorry. Thank you so much.